Okay, so बच्चों, in last class we end this on alkaline and acidic hydrolysis of nitriles. We were actually talking about the formation of carboxylic acid, and in today's class we are moving towards the reactions of carboxylic acid. ठीक है ना? So let's start with the first one. First of all, you need to keep remember that carboxylic acid are actually weak acids, right? Actually weak acids. So the first one is carboxylic acids are weak acid. They dissociate partially in the in their aqueous solution. So let's see, if you have CH3 COOH, it dissociate into water partially and produce CH3 COO negative and H positive ion. So this is actually the dissociation for carboxylic acid. Any carboxylic acid, they all are weak acids, right? Right, every one of you, if you want to see the definition of acid in this, one more definition is acids are proton donors. So if you want to see this definition in dissociation, so you can see this. If you have CH3 COOH and you are adding into the water, so just look at over there, the H is donated by CH3 COOH to the water. So it is actually like this, CH3 COO and the hydronium ion. So this is the second definition for acids that is confirming over here that acids are proton donors. So actually acetic acid, or you can say that ethanoic acid, showing the proton donation over here, that it acts as acid, right बच्चों? जी सर. इनके pH आपके पास there will be somewhere 2 to 3 or 4 भी हो सकती है इनकी pH. ये weak acid है तो 3 to 4 somewhere इस तरह इनकी pH होगी. आपने याद रखना है weak acid की pH थोड़ी सी ज्यादा होती है, near to 7 की तरफ थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है ना? So first of all we need to talk about the reactions of these acids with the different substances. We know that if you remember your O levels, so in O levels you talk about the reaction of acids with metal, right? You talk about the reaction with metal carbonates, you talk about the reaction with bases, right? So this all reactions should be covered over here as well. So let's talk about, if you have a carboxylic acid, you are reacting it with any metal like this. For suppose I have potassium. So what happened, bacho? The same situation over here all the time. Whenever acid and metals are going to react together, they are forming salts and hydrogen gas, right? So over here, the hydrogen gas is compulsory, definitely, and the salt will produce. So what should be the salt? You can see this, the ethanoate ion. This is actually ethanoic acid, 2 carbon wala carboxylic acid को बोलते हैं ethanoic acid. तो इसका जो ion होगा, it would be known as ethanoate, right? So it is ethanoate ion, जो इसके अंदर 2 carbon है, तो उसका charge है -1, right? This is -1. और जब आपके पास इसके अंदर पोटेशियम के साथ इसका रिएक्शन होने वाला है, which is +1. So we know that when the charges are opposite and the numbers are same, we just need to combine them. So this should be the formula of the salt, which is potassium ethanoate, right? This is potassium ethanoate, and for the balancing you can write half over there, or even you can write 2 with every reactant and one of the product over there. All right, bacho? If there are the greater number of carbons in carboxylic acid, there is no effect on the charge. But if the element is changed, like magnesium, which have 2 electrons over there, so the formula of the product would be changed, right? You can see this when the acid and metal are going to react together. Definitely, the one of the product is hydrogen, which is absolutely there. हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि this is the fact. जब भी acid और metal मिलेंगे, hydrogen gas और salt बनेगा. Now, what is the salt? This is actually CH3 COO. CH3 CH2 COO, which is -1, and the magnesium is 2 plus because it is from group number 2. So the formula between these two should be CH3 CH2 COO, and it should be in the bracket and then magnesium. Is that right, every one of you? Yes sir. So bacho, can you write the equation of ethanoic acid with ammonium? Can you write this? Just try this and also try to balance this equation as well. Just write the
correct formula of the product and also balance the equation, please? The one of the product over here is hydrogen gas. So can you please tell me the test for hydrogen gas? Any one of you? Any of you? The test for hydrogen gas. A popping noise occurs. Yes, exactly. But you need to keep remember that the popping sound is going to be produced with a lightened split. The test for the hydrogen gas would be like this, that the test is you need to place a lightened splint. Place a lightened splint near the gas. Lightened splint near the gas. If the gas is hydrogen, definitely it will produce a popping sound. So you can say that it will extinguish with a pop-up sound. It will extinguish with a pop-up sound. The pop-up sound is very much important over here, right? With pop-up sound, it will extinguish with a pop-up sound, right? One more thing is what happened over here, why it is popping up, because hydrogen gas is reacting with oxygen and forming water molecule. And the voice is due to the formation of water molecules. So you need to keep remember that the lightning splint is actually extinguishing because of the formation of water molecule, and the sound is also due to the formation of water molecule. Also, one more thing that I need to ask from you guys, bacho, that what is one of the observation of this reaction? I'm not asking for the test, I am asking for the reaction. This is the reaction. I'm asking what is the observation of this reaction. Any one of you, अगर ये रिएक्शन आपको लिखा हुआ नजर आएगा और अगर हो रहा होगा आपके सामने, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप लोग? कोई भी बच्चा मुझे एक ऑब्जर्वेशन बताए. Bubbles of colorless gas will be formed. Yes, that's the perfect answer. This is the bubbles of colorless gas. But I just want कि आप लोग bubbles की जगह इसको लिखो colorless gas fizzes. बबल्स में और फिजिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है ना? अगर आप कोई जैसे फॉर सपोज अगर आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, तो कोल्ड ड्रिंक खोलने से वो जो कोल्ड ड्रिंक के साइड में छोटे छोटे बबल्स हो रहे होते हैं ना, दे आर नॉट एक्चुअली बबल. वो बबल नहीं होते, वो आपके पास फिजेस हो रहा होता है. तो वो ऑब्जर्वेशन को क्लियर करना जरूरी है. बबलिंग इज व्हेन यू आर हीटिंग द वाटर एंड इट्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसके बाद ये बड़े बड़े बबल्स पानी के अंदर फूल रहे होते हैं ना, दैट इज एक्चुअली बबलिंग. So if you use the word fizzes over there, it would be more appropriate, right, everyone? Yes, sir. And if you want more impact on the examiner, so you can use the word effervescence, right? This is something more good, right? Effervescence of colorless gas, or even you don't need to write the colorless over there. Effervescence, that would give you 1 mark for this, right? Every one of you. Let's move on. Let's talk about the second chemical property of carboxylic acid. So if you talk about second chemical property, so we need to keep remember that whenever you have any acid, even if you have organic acids or if you have inorganic acid, whatever the acid you have, if you have mineral acid, any acid, when any acid is going to react with metal carbonate, when any acid is going to react with metal carbonate, but you keep it in your mind that all the time, salts, carbon dioxides, and water would be the products, right? You need to keep remember this कि ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ये फैक्ट है कि जब कभी भी कोई कार्बोनेट किसी एसिड के साथ मिलेगा तो आपके पास सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा. दिस इज फैक्ट. You need to keep remember this. So for suppose right now we are talking about carboxylic acid, so I need to take one of the organic acid, which is ethanoic acid. दो कार्बन वाला carboxylic acid, ethanoic acid, right? And right now one of the metal carbonate is for suppose calcium carbonate, right? So these are the two reactants. जैसे इनको देखो फौरन से जहन में आना चाहिए यार, एक एसिड एक मेटल कार्बोनेट, एक एसिड एक मेटल कार्बोनेट, तो लाजमी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा. So you must need to write carbon dioxide or water over there. Then the rest of the things are going to be combined together and forming the salt over there. So what are the things that are over there? It's calcium,
and this CH3COO ion. And we know that this is actually CH3COO, which is -1, and calcium is from group number 2, so it should be +2. So this 2 will over here, and this one will be over here. So the formula will be CH3COO bracket 2Ca. And if you want to balance this, so just look at over there. This is 2, so the whole molecule have 2. Is that right, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. One more thing, if you talk about the state symbols, so what should be the state symbol of acid? What should be the state symbol of this? What should be the state symbol of this? This is definitely gas and this is definitely liquid. So बच्चों, CH3COOH के साथ क्या state symbol होना चाहिए? Aqueous. Absolutely right, because all the acids are acid when they dissolve in water and produce as positive ions. So they are always aqueous. Absolutely perfect. What about calcium carbonate, बच्चों? Solids. Solid. This calcium carbonate is actually solid, because if you remember in your O levels, you learned this, that all the carbonates are insoluble in water except calcium, barium, and all the carbonates are insoluble except sodium, potassium, and ammonium, right? So this means that calcium carbonate should be insoluble and it should be solid. And this is a salt of ethanoate, so it should be aqueous, right? So you can see this, that right now we have these state symbols, and by these state symbols, but we can write observations over there. So kindly, any one of you, can you please tell me one of the observation of this reaction? Any one of you. I just want to ask from Zanera. Zanera, can you please tell me one observation of this reaction? Answer bubbles. Yes, again, I'm saying that you don't need to use the word bubble. I just suggest you to use effervescence or the word fizzes, right? So you can say that a gas fizzes, right? Yes, sir. A gas fizzes. So you need to keep remember in observations, बच्चों, you need to write the first thing, which is gaseous. अगर product में कोई भी चीज आपको नजर आ गई गैशियस, तो पहली फुर्सत में ये ऑब्जर्वेशन लिख दो, क्योंकि यही होने वाला है। अगर किसी प्रोडक्ट में गैस बनती है तो ये ऑब्जर्वेशन होने वाली है, इट्स फिक्स, तो ये लिख दें। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई आपने नाम नहीं लिखना, आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज फिजेस, ऐसा नहीं लिखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर देयर, कि आप क्या देख रहे हो, आप वहां पर वो लिखा आपने बताना है। अब वो उड़ती हुई गैस जो है, व्हाइट कलर की कलरलेस गैस जो निकली, वो बता नहीं रही कि आई एम कार्बन डाइऑक्साइड, सो यू आर नॉट सपोज टू राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर सपोज मैं लैब करवा रहा हूं और आप मेरे साथ खड़े होकर लैब कर रहे हैं, और हमारे साथ एक पियून खड़ा हुआ है, सो राइट, तो 3 लोग खड़े हैं, एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक पियून। तो ये 3 लोग एक जैसी चीज ऑब्जर्व करेंगे, और वो क्या होगी कि यहाँ से गैस फिजेस हो रही है, यहाँ बबलिंग हो रही है, स्लाइटली सी बबलिंग, छोटी छोटी सी बबल्स बन रहे हैं, विच इज एक्चुअली फिजिंग। तो वो तीनों सेम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको पता है कि भाई ये कार्बोनेट आपने डाला है एसिड के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बट वो ऑब्जर्वेशन में वो जो बेचारा पियून खड़ा है उसको नहीं पता कि दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑब्जर्वेशन इज सेम फॉर ऑल, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे जाहिल हो, उन सबके लिए ऑब्जर्वेशन सेम होती है। उसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा जाता है। इज इट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? जी सर। ओके, सो मुझे आयशा बता सकती हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप? कैन यू प्लीज टेल मी द सेकेंड ऑब्जर्वेशन? Solid disappears. Exactly. When you have solid on the reactant side and you don't have any solid on the product side, so this should be the second observation over there, that the solid disappear. You will see that कि आपने जो insoluble substance डाला होगा वो वहां से क्या हो जाएगा बच्चों, गायब हो जाएगा। Absolutely perfect, every one of you. Then I just want one more thing from your side, that what is the test for carbon dioxide gas? Any one of you? Suhaib, can you please tell me, bete, if I asked you? Yes, Suhaib. सुहेब या सदफ, चलें सदफ आप बता सकती हैं? Yes, Sadaf, can you please tell me?
सर NaOH होता है ना? यस, मुझे जरा बताएं, आप में से कोई बता नहीं सकता? कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो बहुत आसान होता है यार बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट सर कौन भूल सकता है? जी, Sir, lime water turns milk. यस, दिस इज द सिंपल टेस्ट दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से आप सबको ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, so you need to keep remember it turns lime water milky. So first of all you need to remember the test that pass the gas through lime water, pass the gas through lime water, right, and it turns lime water milky. That's very good every one of you. और एक और टेस्ट हो सकता है इसका, वो कौन बताएगा मुझे? टेस्ट नंबर 2, एनी वन ऑफ यू। एक और टेस्ट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप में से जो दिल चाहे, जिसका दिल चाहे वो बता सकता है। कौन बताएगा? सर सर it turns plain damp paper? blue litmus red. Yes, it turns blue litmus paper red. Absolutely perfect, right? आपको पता होना चाहिए कि carbon dioxide is actually gaseous, so it is acidic gas, right? So it turns blue litmus paper red. So turns blue litmus red, and you need to keep remember turn damn blue litmus into red, right? Because acids are acid when they are in aqueous state, so turns damn blue litmus to red, right? अगर आप बिल्कुल dry use करोगे, so it's difficult for that to turn red because आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिडिक नहीं होती, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब पानी में डिसॉल्व होती है, then it become hydrochloric acid. One more thing with this chemical property is actually the test for carbonates. So बच्चों you can see this, यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा टेस्ट फॉर कार्बोनेट आइन भी मौजूद है, टेस्ट फॉर कार्बोनेट आइन। सो जरा मुझे बताइए व्हाट इज द टेस्ट फॉर कार्बोनेट आइंस बच्चों? आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द टेस्ट फॉर कार्बोनेट आइन? Dilute acid. Yes, any acid. You can add any dilute acid and it will produce what? It will produce a carbon dioxide gas, and you need to mention over there a gas produced which turns lime water milky, right? You don't need to write the name of the gas, right? So you can say that add dilute hydrochloric acid, right? And you need to say that a gas releases that turns lime water milky. Right, बच्चों? Is that clear? जी sir. Okay, then I just want कि आप मुझे ये दो reactions लिख कर दिखाएं जल्दी से. If you have CH3COOH and you are reacting it with K2CO3, and if you have CH3, or for suppose you have HCOOH and you are reacting it with magnesium carbonate. So what would be the answers of these two equations? Just do it quickly, bachcho. I want answer from your side quickly. Number 3, bachcho. The chemical property number 3 is actually about acid and bases, right? So if you have any acid, it is reacting with alkali or base, so definitely it will produce what? All the time it will produce salt and water. This is fixed. So for suppose if you have CH3COOH and you are reacting it with NaOH, so it will form salt and water, right, bacho? Yes, sir. CH3COONA plus water. For suppose you have CH3COOH is reacting with calcium hydroxide, so it will produce what? CH3COO bracket 2 calcium. ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ उनके लिए लिख सकते हो बच्चों जो कि आपके पास जो है सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हो, ठीक है ना? अगर फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा तो उसमें ब्रैकेट बनाने की आपको हरगिज़ जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? Is it clear to every one of you? जी sir. अच्छा, एक और चीज हो सकती है कि हमारे पास जो है ना एक चीज होते हैं बाइकार्बोनेट्स, और यू कैन से दैट हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. तो फॉर सपोज मेरे पास एक एसिड है CH3COOH और ये रिएक्ट कर रहा है बच्चों किसके साथ? बाइकार्बोनेट के साथ, और हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सिर्फ कार्बोनेट हो, दे बोथ आर द सेम थिंग्स,
सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इसके अंदर भी आपके पास क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा. सेम प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म if you have hydrogen carbonate or if you have a complete carbonate, right? Right, sir. Yes, every one of you, these all reactions are here for you. और ये सारे के सारे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले रिएक्शंस हैं that you need to keep remember. आपके पास एसिड से रिएक्शन हो सकता है, आपके पास जो है रिएक्शन हो सकता है मेटल कार्बोनेट से, मेटल जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और आपके पास रिएक्शन हो सकता है किससे, आपके पास रिएक्शन हो सकता है बेसिस से. ठीक है, राइट बच्चों? जी सर. Yes, Now sir. we have one more thing that we need to keep remember is कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना आना चाहिए एक इसमें. देखें, फॉर सपोज एक आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका नाम होता है एसाइल क्लोराइड. एक होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपके पास क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होता है आपके पास एसाइल क्लोराइड. ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है. देखिए इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर है. लाइक फॉर सपोज अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल. यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ कार्बन आप लगा सकते हैं. अगर ये OH आप रिप्लेस करके Cl लगा दो, सो इट इज नोन एज एसाइल क्लोराइड. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास CH3COOH है, you have CH3COOH, so you can convert this into CH3COOCl. आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको कन्वर्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि यू कैन यूज इट फॉर सपोज आप इसमें यूज कर सकते हो PCl5 यूज कर सकते हो. आपको याद रखना है कि हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं. दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर. ये रूम टेम्परेचर पे भी काम करेगा PCl5 अगर आप यूज करेंगे. इसके साथ साथ बचेगा कि आपके पास एक POCl3 चीज बन जाएगी और एक आपके पास HCl बन जाएगा. ठीक है, तो ये दो चीजें बनेगी आपके पास. और हाँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑल्टरनेट के तौर पर क्या यूज कर सकते हो, PCl3 भी यूज कर सकते हो, बट फॉर दिस यू नीड टू हीट. आपको हीट करना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है, आप एक और चीज यूज कर सकते हो विच इज SOCl2. आप ये भी यूज कर सकते हो. उसमें फिर आपके पास इस फॉर्म में भी आप HCl में बना सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, HCl में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट. बट यू नीड टू रिमेंबर, आप ये यूज करोगे तो कन्वर्जन में आपके पास डेफिनेटली CH3COCl तो बनेगा, उसके साथ आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगा H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा आपके पास. ठीक है ना, यहाँ पर जो आपके पास बनेगा वो सेकंड वाली में आपके पास H3PO4 बनेगा, राइट. और इस वाले में भी डेफिनेटली आप बना सकते हो एसाइल क्लोराइड, लेकिन इसके साथ जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और आपके पास HCl यहाँ बनेगा. सो ये तीन आपके पास जो है रिएजेंट्स और कंडीशंस हो सकते हैं जिनको यूज करते हुए आप क्या कर सकती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकती हैं. बट इस रिएक्शन का सबसे मेन फायदा जो है वो है ये वाला, दिस वन. ये जब आप यूज करेंगे ना, आप जब ये यूज करेंगे तो इससे हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा. और हाइड्रोजन क्लोराइड के जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की ऑब्जर्वेशन होती है स्टीमी फ्यूम्स. दिस आर स्टीमी फ्यूम्स, इसके बनते हैं स्टीमी फ्यूम्स. सो यू कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना, आप इसको टेस्ट बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, या आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आप बोलो टेस्ट फॉर हाइड्रोक्सिल, क्योंकि ये अल्कोहल में भी हो सकता है. क्योंकि फॉर सपोज अगर आपके पास CH3CH2OH है, अगर आप इसका रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो वी नो दैट कि यहाँ पर CH3CH2Cl बन जाएगा और साथ साथ आपके पास क्या बनेगा, HCl भी बनेगा. So you need to keep remember कि यहाँ पर भी steamy fumes होंगे. So this is actually the test for hydroxyl. ये जो टेस्ट होगा आपके पास ये किसके लिए होना चाहिए, ये हाइड्रोक्सिल का टेस्ट होना चाहिए. कीप रिमेंबर दिस कि आपके पास हाइड्रोक्सिल का टेस्ट क्या है, हाइड्रोक्सिल का टेस्ट ये है that you need to add PCl5 and you will have steamy fumes, right? So you need to keep remember, ये पेपर में मैंने देखा है टेस्ट फॉर हाइड्रोक्सिल, राइट. ये हाइड्रोक्सिल का टेस्ट है कि आपके पास जब बॉन्ड OH मौजूद हो, व्हाट इज द टेस्ट, you need to add
PCl5, and what will be the observation, बच्चों? The observation will be steamy fumes. The observation will be steamy fumes. Is that all right, बच्चों? जी सर। So these are the very much important things. और ये दिखने में बहुत आप समझते हैं कि छोटी छोटी सी लगती हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे फाइनल पास पेपर्स को, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी अटैचमेंट होकर आ जाती हैं, राइट? सो जस्ट मेक नोट्स अबाउट ऑल दीज इंफॉर्मेशंस एंड जस्ट शोइंग यू ओवर हियर. आप इन सबको अपने पास नोट्स कर लें.